जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Prabhupada, 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees, all glories to the Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tiname Namaste Sasadeve Gauravan Jaine Nirvisasa Shunyavadi Pasad Om Agyanamase Gyananjana Shalakaya Chakshurana Tasminn Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishnam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadam Yandani Vandeyam Shri Guru Shri Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Saganatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Shri Vishakanitam Shah He Krishna Karuna Sinu Dino Jagapate Gopisa Gopina Radha Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Hari Priye Vanchakalpa Hare Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Javīyo nainad devā pūrvam arşat dhāvato'nyān atyeti tişthat tasminn mātariśvā dadhāti. Although fixed in my abode, the personality of Godhead is swifter than the wind and can overcome all other runnings. And the powerful demigod cannot approach him. Although he is one, he controls those who supply the air and the rain. His personal Godhead is swifter than the mind and can overcome all other runnings. Just like the sun is there at one place, and we can experience the light and the heat of the sun everywhere. Similarly, Krishna is there in his abode, Goloka Vrindavan. But he is present here in this material world. Just like light and heat is present, light and heat, fire and light, heat is present here, light is present here, even though the sun is not present here. So by the energy, sun is present. Similarly, by his energies, Krishna is also present. Krishna's energy is, is Aishwarya, which we'll understand from Bhagavad Gita, the opulence of the Lord, plus his, Paramatma form. It is there in our heart. Everyone has Paramatma in their heart. Everyone has two souls. How many of you know you have two souls in your body? Kitne ko pata hai there are two souls in the body? People think there's only one soul. But there are two souls in the body. How many of you know? Yeah, there are two souls in the body. One is you, and the other is Paramatma, Krishna. Both are there, two souls. In the Upanishad, it is said that one soul is eating the fruit, and the other soul is observing. When the bird that is eating the fruit will turn towards the other bird. So like that, Paramatma is just observing us, awaiting, when will we turn towards him? Right now we are engrossed in our own karmas. Karma and vikarma. We are doing some karmas, we are getting reaction. We are doing bad karmas and we are getting bad reaction like animal species or hellish planets. So vikarma will lead you to animal species and hellish planets. The result of karma is human birth and or heavenly birth. So, but both are birth only in the material world, because even if you go to the heavenly planets, there is birth and death there also. You will die there also. Even Brahma dies after 100 years. Everyone has to die in the material world. So that is the constant here. No one can escape death.
The material world was made with an expiry date. What is the expiry date of our material world? What is the expiry date of a material world? Our Brahmanda. What is the expiry date of our material world? Brahmanda, 311 trillion years. Yes. Out of which, how much has passed? Out of that, how many years have passed? Yeah, 155 trillion years have passed. 50% passed. 50% remaining. We are in the, the first day of the next, one after 155 trillion years, the first day in the afternoon to the evening, Sandhya time. We are getting close to the Sandhya time in that day of Brahma. So we have Brahmanda is very long time. But everything is expiry date. The Brahman will also end. So all the living entities living here will also have, will be finished and again go back into the body of Mahavishnu. And when the next creation happens, they will be again put. So there is no escaping the material world without the cycle of birth, death, old age, disease. No escaping without taking to bhakti. Why take to bhakti? Because whatever you accumulate here, you'll have to leave back and go. You can't take anything back, anything with you. You can't take even your body with you. Forget about other things related to body. You can't take your body. What you take, what you carry is your karmas. Your karma, your vikarma, or your akarma. You carry that. What is karma? Karma, like I told, action, reaction, action, any action. Karma which you do, any activity you do, and you get a reaction of that. Vikarma is bad, terrorism, murder, cheating, rapes, all kinds of criminal activities you do. That is vikarma, vikriti. Vikriti means bad activities. Vikarma. So karma is your duties you do. You get the result, you go to the heavenly planets or you get a human form. Vikarma you do, you go to the animal species again or you go to the hellish planets. Then there is third category, that's called akarma. Only when you do akarma, you can get rid of this cycle of birth and death. Get out of this material world and go back to Krishna. What is akarma? Akarma is those activities that are Krishna conscious. That is centered around Krishna. Anything you do, if Krishna is in the center, it becomes akarma. You may be a businessman, you may be a teacher, you may be a doctor, you may be an industrialist, you may be a cricketer, you may be a normal, skillful IT work or whatever, If Krishna is there at the center of your life, if in your life Krishna is there, and you are, surrendering your fruit of those activities to Krishna, then your activity becomes akarma. For example, you may be a good artist. You may draw nice paintings of Krishna. So your art skill also becomes akarma and has no karmic reaction. So you will go back to Godhead. You may be a nice cook. So cook for Krishna prasadam and distribute to the world at large. Open chain restaurants for Krishna, like Govindas, like that, higher taste, and feed others, nice delicious prasadam. So all these activities are, becomes akarma. Hospitals you have, have a nice hospital, make Krishna the center, like, the Bhakti Vedanta hospital, which we have, there the treatment, 50% treatment is done by the Hare Krishna Mahamantra. Because it is said, that the willpower is actually the greatest power that is healing the person. His will to fight a disease. I don't know how many doctors are here, but the doctors will bear with me that if you have a person who has strong will recover faster, right or wrong? Doctors, any doctor here?
they get the willpower. Because hearing Hare Krishna, you become blissful, very happy. Otherwise, आप हॉस्पिटल में रहोगे ना, आपको डिप्रेशन हो जाएगा. सेम कपड़े, सेम खाना, हाँ, बिना टेस्टलेस खाना, राइट. हॉस्पिटल खाना सब टेस्टलेस होता है, राइट. पोहा, जो उपमा जो आता है वो भी इतना टेस्टलेस होता है, खाना इतना टेस्टलेस, सब कुछ, और रोज वही मिल रहा है. वो उसे देख के तो इंसान और बीमार हो जाए. बाप रे बाप, क्या है, और लोगों को आसपास देख के सफरिंग, तो वो इतना डिप्रेसिंग होता है. डॉक्टर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बहुत स्लोली रिकवरी होती है, क्योंकि डिप्रेसिंग एटमोसफियर है, विल पावर इतना नहीं होता है लोगों में. लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से व्हेन यू ऐड दैट, so you're hearing that, you get so much energy, so much anand, bliss, that you get that willpower. Oh, I want to just go and out and serve the Lord. That willpower is very fast recovery hoti hai. So like that, hospital you can have that, where it's centered around Krishna, temple is centered around Krishna, Gurukul, your schooling education is centered around Krishna's education, Bhagavad Gita, Bhagavatam, or you are a nice singer, you can sing bhajans about Krishna. You're a nice lawyer, you can fight for Krishna in the law. A nice politician, you can pass legislations for Krishna. You can. So every way you can serve Krishna. So all these activities becomes a karma then. तो प्रभु जी, क्या उसमें फिर हम जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, जैसे व्यापारी है businessman, if he is working for Krishna, but still businessman has to say lie. Prabhupada told, someone came to Prabhupada once. Prabhupada said, Prabhupada, how can I be a truthful businessman? Prabhupada said, there's nothing as a truthful businessman. Businessman means liar only. So then Prabhupada, how can I progress in bhakti? Lie for Krishna? What you lie so that you earn more money, so that you give to Krishna. Then even your lying becomes bhakti. Imagine. Bhakti is so amazing, even your lying becomes bhakti. अरे प्रभु जी, इससे अच्छा प्रोडक्ट कभी देखा नहीं होगा आपने. देखो कितना चमचमाता है, आपके सर के बाल ला देगा ये. हाँ, आपके सब सर के बाल जितने गए हैं सब बाल आ जाएंगे. ये देखो तेल लगा होगा. झूठ बोलो लेकिन पैसे कृष्णा को दे दो, तो वो भी, उसका भी कर्मा नहीं लगेगा आपको. So sweet, so amazing. Like युधिष्ठिर टोल ना, अश्वत्थामा मर गया, हाथी मर गया, झूठी था. लेकिन यमराज ने अभी देखा तो बोला कि अरे जो कृष्णा के ऑर्डर पे बोला है, तो मैं कैसे युधिष्ठिर को मैं अपराध घोषित कर सकता हूँ. मैं कृष्णा मुझे निकाल देंगे अपने पोस्ट से, कृष्णा के ड्यूटी अगेंस्ट कुछ बोला तो. So even you can lie for them. Many people ask, Prabhuji, can we say lie to our parents for attending the session? I said, yes, you have to say, lying for Krishna is not bad. Forget lying, even robbing for Krishna is not bad. अभी कल जाके सब बैंक रॉबरी मत कर देना, मनी हेस्ट मत कर देना. But even robbery for Krishna is not bad. जो रंगनाथ का मंदिर था, रंगनाथन मंदिर साउथ इंडिया में, it is made by robbery only. The pujaris used to become dacoits, robbers in the night. And जो भी ट्रैवल करता था, पहले के टाइम पे, एक विलेज से दूसरे विलेज, the businessman used to travel. So they used to loot all these businessmen and take their gold, and they made the Ranganathan temple. So it is said, in Shastra, that even lying for Krishna is not bad. You can lie for Krishna, you can cheat for Krishna, you can rob for Krishna. Because when Krishna is in the center, then you do for Krishna, then कौन punish करेगा? लोग बोलते हैं कि अरे जैसे बात चल रही थी demigods में और सब साधु संतों में, आफ्टर द महाभारत वॉर, कि ये वॉर तो कृष्णा ने कराया, इतने लोगों को मरवा दिया, इतने लोग मर गए दोनों साइड में. अब कृष्णा को क्या पनिशमेंट दिया जाए? सो नारद मुनि हंसते हंसते आए, बोले ये आज सब लोग ने कुछ ज्यादा पी लिया है क्या, ज्यादा लगा लिया है क्या आपने वो कृष्णा को पनिशमेंट. तो नारद मुनि बोलते हैं नारायण नारायण कृष्णा कृष्णा, एंड ही कॉल्स यमराज, आइए यमराज जी, कृष्णा को पनिशमेंट देना है. यमराज जी को बुलाया वहां पे. यमराज जी, इनकी बात सुनिए, साधु संत क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये डिस्कस कर रहे हैं कि कृष्णा के वजह से इतने लोग मर गए. कृष्णा ने सारी मॉरल एक्टिविटीज किया, कृष्णा ने इतने लोगों से शादी किया,
कृष्णा ने गोकुल में डांस किया, कृष्णा ने ये किया, कृष्णा ने वो किया, कृष्णा को पनिशमेंट दो यमराज जी, चित्रगुप्त को बुलाओ, देखो कितना है कृष्णा का डेबिट और कितना है कृष्णा का क्रेडिट, एसेट लाइबिलिटीज बनाओ कृष्णा की। चित्रकूट हंस रहा है अपने मन में, यमराज हंस रहा है, बोलता है मुझे मेरे पोस्ट से छुड़ना है, मेरे पोस्ट से निकलना है, मुझे मैं कृष्णा का बनाऊंगा मैं चार्ट। यमराज बोलते हैं भगवान है ये, इनने मुझे यहाँ बिठाया है, तुम चाहते हो मैं इनका बनाऊं बैलेंस शीट। ये इसके बोलते हैं मतलब नानद कृष्ण ने बोला मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, हम सब इनके अंडर है, कौन बनाएगा बैलेंस शीट इनका, कोई नहीं। तो नारद मुनि ने बोला साधु संतों को, देखो आप बनाओगे, आप पनिश करोगे कृष्ण को, हिम्मत है, जिसने पूरा सृष्टि बनाया उसको आप पनिश करोगे। जब सबको समझ में आया कि अरे कृष्णा तो भगवान है, यू कांट। सिमिलरली डिवोटीज भी ऐसे ही है, कृष्णा के डिवोटीज है, जब भी कृष्णा बोलते हैं गीता में न मैं भक्त प्रणश्यति, माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, व्हाई? बिकॉज डिवोटी ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। द्रौपदी को बहुत चाहा था पेरिश करने के लिए ना, साड़ी खींचा, ये एंड में किसने बताया, कृष्णा ने बचाया, माय डिवोटी नेवर पेरिशेस न मैं भक्त प्रणश्यति। Durvasa Muni, when he came to eat the chawal, in Krishna's house, that time, who saved them from his, क्रोध, his shrap? Krishna came and saved. नवे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन तो बार बार पहले के दूसरे दिन अर्जुन मर जाता था वॉर में, अगर कृष्णा नहीं होते तो। जिस तरह से भीष्म पितामह एरो छोड़ रहे थे, अर्जुन is not going to not have survived those arrows. In fact, Krishna had to break his own promise to save Arjun. Name bhakta pranashyati. Krishna protects his devotees. Krishna protects his devotees every stage. So devotees are completely under the protection of Krishna. So that's why Krishna says, Mam ekam sharanam vraja, if you have completely surrendered to me, hey my devotee, giving up everything else, if you have completely surrendered to me, aham tum sarva papebhyo, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा। Destroyed. All our papa, kutab, bija, prarabdha, karmas all get nullified. Finished. बोलते ये तो है मनमानी कृष्णा की है भैया, है तो क्या करोगे बताओ, है व्हाट कैन यू डू? अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओगे, अरे कृष्णा ऐसे कैसे सबके पनिशमेंट खत्म कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट केस भी चला सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही केस चला था कृष्णा के ऊपर, कृष्णा को आना पड़ा था कोर्ट के अंदर गवाही देने। There was this there was this brahmana and he was serving one his guru, not a guru, no, a senior devotee, he was serving Sakshi Gopal. Sakshi Gopal, the deity of Krishna is Sakshi Gopal because he came as Sakshi in the court. कोर्ट में आए कृष्णा ने साक्षी बनके बताने, विटनेस बनके बताने के लिए। इमेजिन कृष्णा अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ही बिकेम अ साक्षी इन द कोर्ट इन उड़ीसा। कोर्ट के अंदर जाके साक्षी बने वो अपने डिवोटी के लिए। क्यों बने? एक ब्राह्मण था ना, उसने मतलब वो पानी वानी में फंस गए वो लोग कहीं पर, तो चतुर्मास था तो आगे नहीं जा पा रहे थे कहीं पे, तो ये लड़का था और उसके सीनियर थे, तो वहां पे उस लड़के ने, वैष्णव ने बहुत सेवा किया मंदिर के अंदर ही, है ना, बहुत सेवा किया, है ना, उस सीनियर वैष्णव का ऐसा। तो सीनियर वैष्णव ने खुश होके बोल दिया कि मैं मेरी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा, आई विल गेट माई डॉटर मैरिड टू यू। वहां पे कृष्णा थे मंदिर के अंदर। तो फिर ये हुआ, चतुर्मास खत्म और फिर गए वो अपने घर पे, जो सीनियर थे, और ये छोटे जो वैष्णव थे वो अपने गांव गए और सबको बोला कि आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड टू दिस, आई एम गेटिंग मैरिड, बोल बोल के सबको बता दिया। सब खुश, पूरा गांव खुश। नाउ ही गोज नेक्स्ट, आफ्टर फ्यू 1-2 months he goes to the other village, to the senior brahmana, and he tells, I have come. तो senior brahmana उनको recognize नहीं करता है, he doesn't recognize who is this person. How can you forget? You promised your daughter's hand to me. So ब्राह्मणा बोलता है कि क्या प्रूफ है?
हाँ, क्या प्रूफ है मैंने किया था? द प्रूफ मतलब आप ब्राह्मण हो, आपको तो सत्य वचन बोलना चाहिए। इट्स अ रियल स्टोरी, कोई फिक्शन नहीं होती है। जब भी नाम भी है ना साक्षी गोपाल, रियल स्टोरी, देयर नो फिक्शन। कृष्णा के साथ में इतनी इतनी स्टोरीज हुई है, नो यू गो अमेज्ड। कहाँ कहाँ मिल जाते हैं कृष्णा, पता भी नहीं चलता है। यू गो टू नाथद्वारा, नो इफ यू गो टू नाथद्वारा इन द हिल्स ऑफ उदयपुर, नाथद्वारा, डेफिनेटली आप कभी ना कभी आपको कृष्णा के दर्शन मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन हो ही जाएंगे आपको। He roams there in the hills so much, and so many people have so many pastime with Krishna in Nathdwara and Udaipur के hills के वहाँ पे. Later they realize, oh, this was Krishna. They don't come to know when the event is happening. Well, Krishna Yog Maya covers it. But then they realize, oh, Krishna came, helped it. Anyways, one of that happened even with me. Actually, I have this experience of in Nathdwara only. I'll tell later someday. So साक्षी गोपाल, he said, भगवान गोपाल के सामने बोला आपने, मंदिर में गोपाल के सामने बोला कौन गोपाल? भगवान कृष्ण गोपाल, उनके सामने आपने वचन दिया। बोला ठीक है, दे तो बोलो उनको, कोर्ट में जाके करे। फिर इसने बोला कि मैं तुम्हें कोर्ट के केस कर दूंगा तुम पे। बोला ठीक है करो। तो कोर्ट में आए, पेशी हुई दोनों की। तो कोर्ट में बोला कि ये प्रॉमिस्ड हिज डॉटर्स हैंड। तो सीनियर ने बोला मैंने तो प्रॉमिस नहीं किया कुछ भी। बोला कि किया आपने, भगवान के सामने किया। तो ब्राह्मण बोलता है क्या भगवान आपके कोर्ट में आके पेशी देंगे कि मैंने बोला? बोला हाँ देंगे। तो जज ने नोटिस जारी किया कृष्णा के लिए, कृष्णा टेम्पल सो एंड सो तारीख में कोर्ट के अंदर हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर। So he went, the junior Vaishnava went to Krishna and said, hey Gopal, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। आप साक्षी हो कि आपने उस ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था, and you are the witness, you have been summoned in the court, you have to appear in the court as my sakshi. And the day came, morning 11 बजे कोर्ट खुला, and वहां पे कृष्णा अपीयर हो गए in the DT form. साक्षी, अब उस दिन से उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। Imagine, this is what is Krishna. Krishna is not some vague God. He is a very personal God. If you have that much faith in Krishna, if you have that much surrender to Krishna, Krishna will reciprocate. Swifter. इस श्लोक में क्या है? Krishna says, although I am fixed, but the person is swifter than the mind. Mind से जल्दी आ जाएगी कृष्णा आपके पास में, mind से जल्दी। And devotees have experienced Krishna, like Prabhupada, he got heart attack and Krishna came and just massaged his heart, and he was fine in the next day. Next 2 days he was fine when he was going to America. So Krishna is very, swifter than the mind. He comes, if you think anything, he is there. Draupadi said, Gopal, Govinda, haath utha ke, and Govinda was there with all the saris of the world to, not let the large of Draupadi go. He was there. Draupadi, Krishna, and Durvasa Muni is here. Krishna was there, swifter than the mind. So he's always there. Devotee has to call with that bhava, with that love and deep, longing for Krishna. If you can call, then Krishna will come. Bilva Mangal Thakur, when he had pierced both his eyes because he lusted on a woman. If he lusted on a woman, so he was like a devotee, so he got so much guilty conscious. So उन्होंने बोला कि मैंने ये दो आंखों से किसी औरत को देखा, लस्टली, मैं दो आंख ही काट दूंगा, तोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपने 2 पिन लिए और दोनों आंखों को तोड़ दिया कि अब मैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अब मैं देख ही नहीं पाऊंगा, तो क्या फिर लस्ट होगा मुझे। उन्होंने अपने दोनों आंखों को पियर्स कर दिया बिल्वमंगल ठाकुर ने, और बोला मैं वृंदावन जा रहा हूँ अब। उन्होंने कृष्ण कर्णामृता लिखे। तो जब वृंदावन जा रहे थे तो he was blind, he did not walk, so एक बच्चा आ गया ग्वालपाल, जो उनकी छड़ी पकड़ के वृंदावन लेके जाने के लिए, और उनसे वो बात कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं। वो बाल गोपाल गोपाल जो
कावड़ बॉय था, वो खाना खिला रहा है बिल्वों को बना के, ये सब पूरा चल रहा है और वो अपना कृष्ण कर्णामृत बोल रहे हैं और कृष्णा वो सुन रहे हैं। कृष्णा कर्णामृत, कृष्णा के कर्ण कानों में जो अमृत गया, वो बुक का नाम है कृष्णा कर्णामृत, जो बिल्वों ठाकुर ने लिखी। कृष्णा पर्सनली खड़े होकर सुन रहे हैं वहां पे। भक्त की भक्त ने, भक्त जा नहीं पा रहा था वृंदावन, आंखें में था नहीं। बिल्वों ठाकुर ने दिल से पुकारा, एकदम लाइक अ चाइल्ड क्राई फॉर हिज मदर, longing, much love, that Krishna came and he took him to Vrindavan, and he heard all the prayers which Bilwanga Thakur was thinking along, while going to Vrindavan, and that prayer became Krishna Karnamrit. So Krishna is, very much present. We can see, experience this loka. He is swifter than the mind, means you think and he's there. You think and he's there. टाइम भी नहीं लगता है कि थोड़ा हमारी जो इंडिया की पुलिस है क्राइम के बाद में आती है, but if you have so much love for Krishna, he'll come before the crime only to save you. He'll come before the crime to save you. So that is what is Krishna. He will not, and I just was telling, experience. We were going in the car. It was like just raising my heartbeat, and then वो अपने कीर्तन करते करते और चले और हम पहुंच गए. So Krishna is like, he protects, he sends, he does what you don't know. That is Krishna. That's why, when a person who have really understood Krishna, he falls in love with Krishna. You cannot stop yourself falling in love with him, because he is there that he will come at such situation and solve your problems, and just go away. You will not even realize that he has come and solved it. But then you realize afterthought, अरे ये कैसे solve हो गया चीज? Without Krishna's mercy, that's not possible. So is that he's swifter. Whenever he sees his devotee in problem, he just comes there, running faster than anyone else. किसी और को सोचो बुलाओ, उससे पहले कृष्णा आ जाएगा आपके पास हेल्प करने आपको किसी ना किसी वे में. That's why I say the most powerful demigods cannot approach him, but a devotee की एक पुकार से he comes, या devotee को प्रॉब्लम में देख के he comes running faster. devotee को एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, he'll come running. This is Krishna. And जितने बड़े बड़े demigods है, Brahma, Shiva, they can't approach Krishna. They have to take the permission of Garbhodakshaya Vishnu to, first of all, they have to go and stand on the shores of Garbhodakshaya Vishnu. Garbhodakshaya Vishnu is lying there, or sometime Shirodakshaya Vishnu, they have to go where Shirodakshaya Vishnu is in Brahma Loka. So they have to go there and stand there and do their prayers and all those sukha, so all these they have to chant everything. And then if Vishnu desires, he'll give them darshan. I'm talking of Brahma, Shiva, and Indra and Chandra and so. If these things. But for Krishna or for devotees, प्रहलाद महाराज के लिए, प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ भगवान यहाँ पे भी है. हिरण्यकशिपु गया तोड़ने पिलर, नरसिंहदेव आ गए वहां से, swifter than the mind. प्रहलाद को देखा प्रॉब्लम में, नरसिंहदेव आ गए. ध्रुव को देखा प्रॉब्लम में, विष्णु आ गए. कृष्णा इज लाइक दैट. आप हमारे डिवोटीज को प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकते हो. बट द बिग बिग डेमिगॉड्स, दे कांट अप्रोच हिम, बट ही बिकम so easily approachable for us devotees in his holy name. कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. कृष्ण ने अवतार लिया है अपने होली नेम में. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णा का मोबाइल नंबर है. क्या है ये? कृष्णा का मोबाइल नंबर. इसको डायल कर दो अपने, इसको इस पे रखो सबसे टॉप में, पिन करके नंबर को, रोज इसको निरंतर लो. एंड कृष्णा विल appear in your heart, first on your tongue and then in your heart. So how to make Krishna swifter, how to develop our bhakti swifter to Krishna, that we reach Krishna very fast. That we have to understand. That is whole Bhagavad Gita is, that we develop that kind of bhakti, that we reach Krishna very fast. And who can reach Krishna very fast? Which devotee can reach Krishna very fast?
Which devotee can reach Krishna? Speed dial से भी slow, speed dial से भी fast है. ये तो चिंतामणि, mind dial. This is mind dial. Mind में सोचो Krishna and Krishna is here in your heart, on your tongue. Shastra says when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare. जैसे बिल्वमंगल ठाकुर को कृष्णा ने सुना था, Krishna hears. Krishna Karnamrit. This Hare Krishna Mahamantra is Amrit for Krishna's ears. The Hare Krishna Mahamantra is Amrit for Krishna's ears. So when you chant the Hare Krishna Mahamantra, Krishna personally comes and hears. कि मेरे डिवोटी चैंट कर रहा है मेरा नाम. इसीलिए बोलते हैं अटेंटिवली चैंट करो. माइंड यहाँ मत जाने दो, क्योंकि कृष्णा स्वयं सुन रहे हैं आपका जपा. और कृष्णा क्यों सुन रहे हैं आपका जपा? क्योंकि इस जपा में राधा रानी का नाम भी हरे. तो कृष्णा का अटेंशन हरे पे ज्यादा है. कृष्णा सुन रहे हैं और हम हरे हरे को ही सबसे ज्यादा मिस कर देते हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा लास्ट का हरे हरे हम खाई जाते हैं. चैंटिंग करते हैं ना फास्ट करने के लिए. क्या करते हैं हम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे खाए जाते हैं हरे हाथ का. अरे वही तो हरे सुनने के लिए कृष्णा आते हैं अपने कान लेके. बिकॉज ही वांट्स टू हियर राधा's नेम. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे. pronounce it. Make an effort to pronounce it. Don't खा मत जाओ. खा जाओगे तो फिर कृष्णा चले जाएंगे. आपकी चैंटिंग पे खाऊ बन जाएगी, मटेरियलिस्टिक, सॉरी मैकेनिकल. सो chant with every word distinctly pronounced, and Krishna will be all ears, hearing it very minutely, very detailedly, because just the word, utterance of the word Ra makes Krishna goes into ecstasy. So imagine if you chant Hare Krishna, Krishna को कितनी ecstasy होगी. तो कृष्णा सुनने आते हैं हरे नाम, और राधा रानी सुनने आती है कृष्णा का नाम. दोनों सुनने आते हैं युगल. इसलिए हम युगल को वर्शिप करते हैं, सिंगल को नहीं. बिकॉज बोथ. इमेजिन आप कृष्णा का नाम भी नहीं प्रोनाउंस करोगे तो राधा रानी चली जाएगी दूर, और हरे नहीं प्रोनाउंस करोगे तो कृष्णा चले जाएंगे दूर. फिर दोनों की मर्जी आपसे दूर. इसलिए ऑलवेज चैंट वेरी डिस्टिंक्टली, वेरी अटेंटिवली. डोंट लेट योर माइंड गो हियर एंड देयर. माइंड जा रहा है, माइंड को मारो, बोल वापिस आओ, सुनो. This is how you can go very fast. You can directly connect with Krishna. This is called Shuddha Naam. There are three stages of Naam. One is tongue deep, one is throat deep, and the third one is heart deep. What you chant right now is just tongue deep. Neophytes chant tongue deep. Madhyamadikari chants throat deep. Uttaramadikari chants heart deep. We have to chant heart deep. Our mantra should come from the heart, not from the tongue. Just formality. हम तो बस 16 माला किया है, चलो फॉर्मेलिटी के लिए कर लो 16 माला, क्योंकि गुरु से नाम मिला है, गुरु से प्रॉमिस किया है. फॉर्मेलिटी है, वो खाली टंग डीप रहेगा, उससे कृष्णा नहीं आएंगे. उससे कृष्णा विल नॉट कम टू यू स्विफ्टर. neither you will go to Krishna swiftly. You have to be, it has to be heart deep. एक नाम हार्ट से पुकारा, आपके सारे कर्मास खत्म हो सकते हैं. Just by one name of Hare Krishna. Krishna's one name by the heart, which heart deep, all finished. What is heart deep? When your mind, your tongue, your heart is in synchronization. That is called pure Shuddhanam. What is Shuddhanam? When the mind, the tongue, and the heart are synchronized. अभी हमारा क्या होता है? टंग बोल रहा है, माइंड कहीं और है, हार्ट कहीं और है. माइंड कुछ और सोच रहा है, हार्ट कुछ और सोच कर रहा है, और खाली टंग टाइप राइटर से चल रही है, टक 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 चल रही है. उससे कृष्णा नहीं, वो शुद्ध नाम नहीं, वो नाम अपराध होता है. नाम आभास, टंग एंड द माइंड. शुद्ध नाम, टंग, माइंड एंड द हार्ट सिंक्रोनाइज जब होता है, उसको शुद्ध नाम बोलते हैं. आपका माइंड भी कृष्णा के ऊपर है, स्मरणम, माइंड, टंग से श्रवण कीर्तनम, एंड हार्ट से निकल रहा है वो फीलिंग्स, भाव. दैट इज प्रेमा, दैट इज शुद्ध नाम.
We have to reach that stage of Shuddhanam. Then Krishna will be all ears, Radharani will be all ears, and we'll be able to swiftly see Krishna. हमको कृष्णा के दर्शन swiftly होंगे. How to develop it? How to develop this mood to chant with heart? कैसे डेवलप करना है? ये डेवलप होता है कृष्ण की लीलास से, अट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन. उसके अंदर कृष्णा की लीला में एब्जॉर्प्शन होना. किसको पता है 5 A's? याद है किसी को 5 A's? Anyone remembers the 5 A's? मैंने बताए थे नाम तत्व में. The 5 A is. फर्स्ट क्या था? सबसे पहला A क्या था? Attraction. Yes. Get attracted to Krishna. Krishna's naam, Krishna's form. First the attraction will come to Krishna's form. His beautiful form in the temple. So, and then you start reading about Krishna. So 4 वे में greed develop होती है. कृष्ण कथा, कृष्ण फिलोसफी, कृष्ण दर्शन और गुरु मर्सी. ये चार चीज से अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति डेवलप होता है. So, गुरु की मर्सी कैसे आएगी? गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. और डीटी दर्शन, मंदिर जाके दर्शन करो, या अपने आपके घर में राधा कृष्ण के विग्रह हैं तो उनको रोज श्रृंगार करो, या विग्रह नहीं है तो अपने माइंड में श्रृंगार करो. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे श्रृंगार करना है, डीप हर चीज को डिटेल में श्रृंगार करो. सो उससे कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होगा. कृष्णा के बारे में फिलोसफी सुनो तो मालूम पड़ेगा कि कृष्ण भगवान क्यों है. हम कृष्णा को भगवान क्यों बोलते हैं? ऐसे हम सेंटिमेंटल थोड़ा है. हम कृष्णा को भगवान मान लिया, हमने पूरा देखा है, अनुभव किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, जब रियलाइज किया है कि यस कृष्णा इज गॉड बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी. देयर इज नो वन अबव हिम, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम. वी हैव एनालाइज्ड इट. सांख्य योगा यही है कि एनालाइज करना सारे मटेरियल एलिमेंट्स को, कैसे वो जुड़े हुए हैं, किससे वो जुड़े हुए हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं. और जब सोर्स के पास जाते हो तो देखते हैं महाविष्णु सोर्स है उनका, और फिर उन महाविष्णु के सोर्स के पास जाते हो तो देखते हैं कृष्ण सोर्स है उनका. तो उस समय पता चलता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड. हम किसी यूट्यूब को या देख के, रील को देख के हमने थोड़ा डिसाइड कर लिया कि कौन गॉड है. पूरा उसके पीछे रिसर्च है. भागवतम इज अ रिसर्च बुक. द होल भागवतम इज अ रिसर्च बुक, साइंटिफिक रिसर्च बुक, जहाँ पे 12 महाजनों ने अपना रिसर्च डाला है. कौन है 12 महाजन? कौन है 12 महाजन? क्या नाम है 12 महाजनों का? Who are the 12 महाजन्स? किन्ने डाला है अपना रिसर्च वर्क? नाम पता है? कितने बड़े बड़े नाम है उसमें? बताइए कौन कौन है? Who are the 12 biggest scientists of all time जिन्होंने अपना रिसर्च पेपर श्रीमद् भागवतम में डाला है? बोलो. प्रहलाद महाराज, लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा, कुमार, नारद, यमराज, इतने बड़े बड़े नाम, उनका रिसर्च वर्क है श्रीमद् भागवतम. भागवतम कोई ऑर्डिनरी पुराण नहीं है. इट्स अ रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंट. ऑलरेडी जैसे आइंस्टाइन ने किया एक्सपेरिमेंट, हम दोबारा वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते. आइंस्टाइन ने करके दे दिया थियोरी, हम उसको खाली एक्सपैंड करते हैं, फॉलो करते हैं. तो उसको अलग अलग वे में हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं थियोरी को अलग अलग चीजों में. उसी प्रकार 12 महाजन हैं जिन्होंने हमें शास्त्र और बताया कि कृष्ण भगवान क्यों है, कृष्ण को पाने की क्या विधि है. हाउ कैन यू रिकनेक्ट विद कृष्णा, हाउ कैन यू सर्व कृष्णा, हाउ कैन यू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, हाउ कैन यू गो बैक टू गॉड. एंड हु आर यू, व्हाट इज द रिलेशन विद कृष्णा. संबंध अभिधेय प्रयोजन बताया है. दिस 12 महाजन ने आर संबंध विद द लॉर्ड, द अभिधेय, द प्रोसेस टू re-establish that relationship, sambandha, and the goal, what happens when you develop that sambandha.
they have described these 12 महाराज. So वो रीड करते हैं, हम भगवत गीता रीड करते हैं तो कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन होता है. गुरु मर्सी, शास्त्र, कृष्ण कथा, कृष्ण फिलोसफी एंड डीटी दर्शन, इससे अट्रैक्शन फॉर कृष्णा डेवलप होता है. You become attracted. Oh wow, Adbud. Krishna is such a amazing personality. How he expands, how the universes come. My God, when you become ascharya-chakit. Seeing Krishna's opulence, how he showed the entire, Virat Roop. Become totally amazed, astonished by that. So you can have attraction for Krishna. Because qualities, and character and so many things are opulence, everything that is attractive, that draws our attraction. So once you are attracted to Krishna, then what happens? Attracted to someone, then what happens? What's the next stage after attraction? What is next after attraction? What happens after attraction? Suppose you are attracted to a boy or a girl. What will you do once you're attracted by the qualities of that girl, or by the beauty of that girl, or by the character of that boy or girl? What will you do? You pay attention to that girl always. क्लास में आएगी तो क्लास में बैठोगे, बोलोगे अरे आई कि नहीं आई अभी तक, आया कि नहीं आया अभी तक. होता है, करते हो कॉलेज में, हाँ राइट. क्लास चालू हो अभी तक आई नहीं हो, या रास्ते पे खड़े हो के अरे कब आएगी कब आएगी कब आएगी. अपने घर के नीचे खड़े होते हो, कब बालकनी में बाहर आ जाए वो, या नीचे आ जाए वो, हाँ, या अपने सहेली के साथ में कहीं दिख जाए वो, राइट. So you're always looking attentive to her presence or his presence. So similarly, when you become attracted to Krishna, attraction to Krishna by by deity worship, by Guru's mercy, by Shastra, by Katha, then you become attentive. You become attentive. Similarly, same with the Naam. You become attentive to the Naam when you become attracted to the Naam. Attention. Then attention के बाद में क्या होता है? Once you are attentive, once you see that, that, okay, so and so has come in the room, or in the classroom, or in the college, then क्या होगा next? उसके बाद क्या होगा? Absorption. Yes, you become absorbed. उसी को देखते रहोगे. आजू बाजू टीचर क्या बोल रही है, फिजिक्स पढ़ा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है, बायोलॉजी पढ़ा रही है, सब कुछ पढ़ा रही है. आपकी तो केमिस्ट्री उसके साथ में चल रही है, या चल रहा है ना, आपकी केमिस्ट्री उसकी लड़कियां चल रही है, लड़कियां चल रही है क्लास में. आजू बाजू किसकी क्या चल रहा है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. आपकी केमिस्ट्री उससे हो गई बस, अब उसी को देख रहे हो. एब्जॉर्प्शन. बाजू में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या कोई तेल लेने जाए, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. The girl you liked or the guy you liked has come in the classroom, अब total absorption उसी में. पूरे टाइम 40 मिनट उसी को देख, क्या क्लास में पढ़ा है कुछ पता नहीं, राइट. Become totally absorbed. Same way with Krishna. Attraction, attention. You're very attentive in Krishna Katha, you're attentive in hearing the holy name. Once you get the attraction, then you become absorbed, totally into it. Smaranam comes, the mind activate हो जाता है, mind becomes totally absorbed. Mind यहाँ वहाँ नहीं जाता है. This is called absorption. Absorption के बाद में क्या होता है? After absorption, what happens? Attachment, completely राग, deep attachment. माया मना पार्थ योग झुंझुन मदाश्रय, लिंक हो जाता है लड़की से. वो छींकते तो आप छींकते हो, उसको भूख लगी तो आपको भूख लगेगी, उसका उदास तो आप उदास हो गए. होता है ना ऐसा. अटैचमेंट में यही होता है ना, कि उसने नहीं खाया तो आप भी नहीं खाओ, उसने ये, वही चलता रहता है. माता जी लोग को ज्यादा पता है, प्रभु जी लोग को तो फर्क नहीं पड़ता है. प्रभु जी लोग की थ्योरी है कि बस और लड़की के भी कहीं भागने का नहीं, एक जाएगी दूसरी आएगी. लेकिन माता जी लोग को बहुत फर्क पड़ता है इससे. दे बिकम टोटली मैड अटैचमेंट में.
बस भूख प्यास सब छूट जाता है उनका, वो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकम टू मच इन्वॉल्व। सिमिलरली कृष्णा के साथ भी ऐसे ही होता है हमारा। कृष्णा से इतना डीप अटैचमेंट हो जाता है कि कृष्णा के बिना कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह उठे तो कृष्णा, सोए तो कृष्णा, लॉस्ट योर हार्ट टू कृष्णा। पूरे दुनिया से, समाज से आपका अटैचमेंट खत्म हो गया, ना शादी करनी है, ना नो कुछ करना है, बस अब खाली कृष्णा की सेवा करनी है। अटैचमेंट हो जाता है कृष्णा से। वो अटैचमेंट हो गया, उसके बाद में अफेक्शन, भाव, इमोशंस, प्रेमा, लव डेवलप्स। कृष्णा के लिए अगर टाइम पे खाना नहीं दिया तो आंसू आ जाएंगे। कृष्णा से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हो, कृष्णा को देख के आपके आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। ये भावा स्टेज। So this is what happens, when you become totally, absorbed in Krishna, attached to Krishna, affectionate. How to develop this? ये कैसे डेवलप होगा? ये 5 A's कैसे डेवलप होंगे इंसान में? How will you develop? Attraction, attention, absorption, attachment, and affection. सबसे पहला है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा एंड फिलोसफी साथ साथ में जाना चाहिए। तो फिलोसफी तो हम सुनते हैं, भगवत गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, एवरीथिंग इज देयर, जो हमको प्रिपेयर करे टू बिकम स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स कृष्णा। दिस इज पार्ट ऑफ साधना भक्ति, वेदी साधना भक्ति। अदर पार्ट इज रागानुगा साधना भक्ति। वो किससे डेवलप होती है? कृष्ण कथा से। कौन सी कृष्ण कथा से? आपको अटैचमेंट होगा कृष्णा से, नाम में रुचि आएगी, आपके मूड आएगा आपका चैंटिंग के लिए। इसमें भी मेडिटेट करना चाहिए हमको। कौन कौन सी है? 2 प्रकार के गीत हैं कृष्णा के, फिलोसफी गीत एंड लीला गीत। फिलोसफी गीत विल डेवलप, make your siddhanta very strong, and it will make you in Vedic bhakti, do Vedic bhakti very sincerely. But that is not, will not take you to the raganuga bhakti. For raganuga bhakti, which geet you need? For raganuga bhakti, which geet you need? Plus Gita plus what? Bhagavatam. That's why Prabhupada made both Gita and Bhagavatam. भागवतम में कौन से गीत हैं? पता है किसी को? भागवतम में कितने गीत हैं? Anyone knows भागवतम में कितने गीतास हैं? आप बोलोगे अरे हे प्रभु जी, ये तो पहली बार मैं सुन रहे हैं, भागवतम में भी गीता है। हाँ, भागवतम में भी गीता है। ये गीत कृष्णा ने बोला, भगवत गीता, और वो गीत कृष्णा के डिवोटीज ने बोला। कौन कौन से गीत है बताओ? भागवतम में कौन से गीत है? सबसे पहला गीत वेणु गीत। हाँ, उद्धव गीत, उद्धव गीत भी है, वेणु गीत। लेकिन उद्धव गीत इज वेदी भक्ति के लिए। वेणु गीत। सेकेंड इज प्रणय गीत। थर्ड इज गोपी गीत। फोर्थ इज युगल गीत। फिफ्थ इज विरह गीत, and the sixth is Brahmar Geet. These are the 6 Geets, songs of the devotees that will develop your Raga Nuga Bhakti, that will develop your bhava, your attraction, the 5 A's. The 5 A's, which I told, this will help you to develop it in a very intimate manner with Krishna. The first Bhagavad Gita will also help you develop the 5 A's, but that is on the philosophical level. But now to move from philosophy, Vedic Bhakti, to Rag Bhakti, Raganuga Bhakti, you will require Bhagavatam, these 6 Geets of Bhagavatam, which will saturate you, or absorb you with Krishna Bhakti, with Krishna feelings for you. So what is Venu Geet? Venu Geet is
What is Venu Geet? Anyone knows? Venu, yeah, Venu, which Krishna plays in the different notes. So when you hear those kathas that how Krishna is playing his flute beneath a kadamba or a kadamba tree or a imli tree, and he's calling to his different devotees. So that feeling, when you meditate on that again and again and again, how he's calling, a desire in your heart will develop. Oh, even I want to hear that Venu of Krishna. When will I be able to hear that Venu of Krishna? Will I be able to hear that Krishna calling my name, my spiritual name? Maybe one day I'm chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and suddenly you hear Anushka in the flute form, Anushka, any in the spiritual name you hear, and you are like, are my ears? क्या सुन रही हूँ मैं? What? And you will not find the source, and you will like, what, that real? Because when you become so much absorbed in the Venu Geet, that's why you should read the Venu Geet, how Krishna calls. So that will make your mind into spiritual, dotted towards that pastime so much that one day when you are totally absorbed in the chanting, you will hear Krishna call out your name. Till then, beg Krishna to call out your name. Oh Krishna, please someday, like Krishna called Brahma's name. Om. When Brahma was meditating, Krishna called Venu. From his Venu, he called Krishna, Brahma's name. And he gave all the knowledge of Vedas to Brahma. Brahma Hriday. If Brahma realized all the Vedic knowledge in his Hriday from Krishna's flute and the Gopal Gayatri, and that made him understand this Brahma Gayatri, Om Bhur Bhuva Swaha, Tatsavitur Vareniyam. And then he expanded the Brahma Gayatri into the Vedas. And that Vedas, expanded further into Puranas. That was all started by the sound of Krishna's Venu. Whole creation started with Krishna's Venu. And similarly, our creation of spiritual form, spiritual Murti, Murtalinga, Murti, will start also with the Venu of Krishna. That will be revealed. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabonoy. Shravanadi Suddha Chitte Karo Uday. Shravanadi, hearing. You will hear your name in your spiritual name in Krishna's flute one day. That will be your Siddha Swarupa. Krishna will reveal. This is how Krishna revealed to Brahma. How Krishna revealed to the other gopis. When gopis used to sit, or the cows, Krishna used to stand under the tree and just call out the cow's name, Ganga. The Ganga cow will come. The group Ganga, Yamuna, all the Yamuna cows will come. They will hear the name. And normal people will hear Krishna is playing a flute. But Krishna plays, is expert. He plays the flute in such a way that only that group will hear the name. So simultaneously, so that is in the first note or the second note. The first note he plays, the rocks of Vrindavan melt. Yamuna starts flowing ulta. The trees start shedding honey. The cows start giving milk. Automatically, the deers, they raise their ears and stand. The peacocks start dancing, thinking that the Sham, the Ghansham clouds have come to pour the rain. Start dancing. This is the first note. The second note is for different devotees, cows, and everyone. For Brahma and Shiva, when once like Shiva was sitting in his meditation, in Kailasha, and Krishna played flute. Played his flute, and in that flute he called Shiva, 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 Shiva. And Shiva is like meditating on Krishna. He's always chanting Ram, Ram, Rama, Raghav, Ram, Raghav, Ram, Raghav. And he's hearing this name by Krishna in his ears, and he became totally, he just came out of his samadhi and started dancing. You might have seen that, he started dancing, and Parvati is like, what's happened to Shiva? Some ghost entered into his body, and suddenly he was in samadhi and just got up and started dancing. Like, Tandav Nitra is doing, and Krishna is playing his flute here, and he's dancing on that tune, and then Brahma, and then simultaneously Krishna sent the message to Brahma, the quote to Brahma, his name, and Brahma is like with, teaching Saraswati,
Shastra, Saraswati playing Venu, her sitar, and suddenly Brahma, अपने कमल के ऊपर खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं. Like Saraswati thinking, what is wrong with you? Something happened. You start dancing, Shiva start dancing, Narad start dancing, demigods start dancing, themselves of heavenly planets start dancing, Gandharva log start dancing Krishna's flute. उनका नाम सुन के. And then Krishna calls the gopis. The gopis are sitting in their house, and suddenly the flute will come, Vishaka, 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 Lalita, Lalita, Lalita. They will hear their name only. They will not hear others' name. Tunga Vidya, Tunga Vidya, Tunga Vidya, Chindaleka, Chitaleka, Chitaleka, Induleka. Then end में Radharani, Radharani, Radharani. And they'll run. So Venu Geet. That is how you should hear more and more about Krishna's flute. How Krishna, Krishna has come for, has these four qualities: Rupa Madhurya, Leela Madhurya, Venu Madhurya, and Prema Madhurya. So Venu Madhurya, Krishna's Venu is so Madhurya that, it creates a greed in our heart to become attracted to Krishna. Attraction, then, attention, absorption, affection, complete attachment and affection to Krishna. It helps us develop that Venu Geet. And then after Venu Geet, the Pranaya Geet. What is Pranaya Geet? Pranaya Geet, when you hear about how Radha and Krishna became one, couldn't live without each other. This appears in the 10th canto, end of the first chapter. Chapter 29, verse 31 to 41 is the Pranaya Geet. As the gopis heard Krishna's flute inviting for conjugal Leela, they dropped everything and ran through the dark, frightening forest to stand right before their beloved Shyam. Yet Shyam appeared to have rejected them, so the damsels of Vraj forcefully expressed their loving sentiments and pure intention in their outpouring of deepest love. And the Vraj gopis reveal a type of sweetness called pranaya. Better understand the gopis feeling at that time. This we have to read, understand it. In Ujjvala Nilamrit Kiran it is said. Pranaya Prem is the mentality of equality and the oneness of heart between the lover and the beloved. It includes boldness, firm faith, trust. It is completely free from from the slightest sense of reverence. There is no awe and reverence. It's completely, you are mine feeling. You are my Krishna. I am yours and you are mine. That's it. There is no jijak. There is no kaan pakarna. You boldly declare to Krishna. You completely try to control or win over Krishna and stamp that Krishna is your property. That is Pranaya Geet. When the gopis stamped, how can you not be, reject us? You are ours. And Krishna likes that. When devotees become possessive about Krishna, when devotees stamp their authority on Krishna, कृष्णा को नहीं पसंद है वो भगवान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मेरे लिए वो कर दो. कृष्णा बोलते हैं उसके लिए शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्रा है, चंद्रा है, लक्ष्मी है, गणेश है, उनके पास जाओ. मेरे पास क्या करने आए हो? कृष्णा बोलते हैं मेरे पास आओ तो ऐसे आओ कि I belong to you and you belong to me. Your and my heart are one. What you are feeling, I can understand. What I am feeling, you can understand. उस अथॉरिटी के साथ आओ मेरे साथ में. इसको बोलते हैं प्रणय गीत. When the gopis and the devotees express their boldness to Krishna, express their firmness to be with Krishna. कृष्णा बोलते हैं रात को हो गई, जाओ जाओ अपने घर में जाओ. बोला क्यों जाए हम? You called us with your flute, now be with us. We are not going anywhere. That is, firmness. That is the boldness the gopis display. That is called pranay. Faith in that Krishna will protect. कुछ भी हो जाए हम कृष्णा से प्रोटेक्शन नहीं मांगे, बट कृष्णा बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्ट करेगा. हम किसी भी डिफिकल्टी में चले जाए, कृष्णा इज देयर.
इतना faith, इतना trust कृष्णा के अंदर. That is called the प्रणय गीत. तो इसके लीलाज आप सुनोगे कि कैसे गोपीज का फेथ कृष्णा पे, कैसे डिवोटीज का फेथ कृष्णा पे, कैसे डिवोटीज अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कृष्णा के लिए. So that is what is pranay. Like like the child who offered Krishna bhoga, with authority, and Krishna ate the bhoga. हम जाके कृष्णा को भोगा ऑफर करते हैं, कृष्णा प्लीज खा लेना, प्लीज खा लेना, मैंने इतने बनाया है. अथॉरिटी नहीं होती है ना, वो ऑ एंड रेवरेंस होता है. उसने क्या किया था, his father told him, I am going to a nearby village, so today I will not be able to offer bhoga to Krishna, so you offer it on my behalf. A small child, 5 or 6-year-old child, he knew how to offer. He went to Krishna, filling the bhoga plate, and he offered bhoga to Krishna, as his father taught him, awe and reverence. He came out, 15 minutes waited, पर्दे को साइड में किया, 3 बार क्लैप किया, और जाके देखा तो अरे तो प्रसाद तो यहाँ पे ही है. ये क्या हो गया, कृष्ण ने प्रसाद नहीं खाया. पापा तो रोज ऑफर करते हैं और कृष्णा खा लेते हैं पापा का, तो उसको क्या पता खाते नहीं खाते. थिंकिंग दैट मतलब आपने कुछ ऑफर किया तो कृष्णा खाएंगे. चाइल्ड इज अज्यूमिंग दैट, स्मॉल चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड, the only thing is there is pure feelings are there, nothing he doesn't have knowledge and everything. कृष्णा खाते नहीं, कृष्णा खाली अपने आंख से देखते हैं और प्रसाद बन जाता है. चाइल्ड की फीलिंग है ना, चाइल्ड को बोला कैसे नहीं खाया कृष्णा ने मेरा. मेरे पापा आएंगे, मुझे बोलेंगे, डांटेंगे कि कृष्णा ने आज, मैं रोज ऑफर करता हूँ, कृष्णा खाते हैं, तुमने नहीं खाया, कैसे डिवोटी हो तुम. तो लड़का बोलता है कि प्लीज खा लो, प्लीज खा लो. तो मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं मुझे. फिर ऑफर करके आता है, फिर खुलता है तो नहीं खाया कृष्णा ने. लड़का बोलता है कि अरे कृष्णा नहीं खा रहे हैं, क्या करूं. तो लड़का लेके आता है एक लकड़ी, स्टिक लेके आता है, लकड़ी लेके आता है, बोलता है अब चुपचाप खा लो प्रसादम भोगा, वरना इससे से मार पड़ेगी. अथॉरिटी, बोल्डनेस, फर्मनेस कर दिया. ये चुपचाप प्रसाद भोग खा लो, वरना है ना ये छड़ी से पिटाई पड़ेगी तुमको. भाई कृष्णा को बोल रहे हैं. क्या करते कृष्णा, पर्दा बंद किया, पर्दा खोला, प्रसाद खाली, भोगा प्लेट खाली, कृष्णा ने खा लिया सब. लड़का खुश, वाह कृष्णा ने खा लिया, मतलब मेरी भक्ति सफल हो गई. फादर आते हैं उसके, बोलते हैं अच्छा वो लेके आना जो अब प्रसादम है, भगवान को जो ऑफर किया. लड़का के बोलते कौन सा, अरे तुमने ऑफर किया था ना, ऑफर किया ना, ब्रिंग दैट प्लेट. या आई ऑफर्ड कृष्णा ईट. फादर व्हाट, या कृष्णा ईट व्हाट, यस कृष्णा ने खाया. बोलते क्या मजाक कर रहे हो, हाउ इज दैट पॉसिबल. बोला यस सी कृष्णा ईट. देन ही रियलाइज दैट ओ माय गॉड, ही हियर्स द होल स्टोरी एंड सेड माय गॉड, मैं तो अपने ब्रह्म ज्ञान में लगा रहा, शास्त्र पढ़ने में, इसमें उसमें, ये तो भक्ति में मेरे से इतना आगे निकल गया कि भगवान स्वयं आके खाना खा रहे हैं. राइट, स्वयं आके खाना खा रहे हैं. तो ये होती है प्रणय भक्ति, where you stamp your authority on Krishna, and yes, you are mine and you will have to listen to me. You can't behave independently of me. I want to explain that. That is, so these kind of pastimes, when you hear, you develop your attraction for Krishna, and your spontaneous love develops, and you become swiftly connected to Krishna. Gopi Geet. What is Gopi Geet? Gopi Geet are, when the gopis are feeling immense separation for Krishna. That should be our feeling when you're chanting. Feel separation from. Hear the Gopi Geets, how the Gopi Geets, Gopi are singing in separation for Krishna, and that develop that mood that we also can feel that separation. Where are you, Krishna? Hey, Krishna. Hey, Radhe, Jabraja Devi ke chalalite, hey, Nanda Suno Kutaha. Where are you? Where are you? Where are you? They are searching, the gopis are searching and singing, where are you, Krishna? Where are you, Krishna? We can't see you. Are you hidden behind some bush?
Or are you with Chandravali? Or where are you today? Where are you blowing your flute? At Yamuna or Keshi Ghat or Bamsi Wat or where? Where are you? Huh? Vibhavari Sesha Aloka Pravesha Nidrachari Yudha Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Narasimha Vamana Sri Madhusudana Braja Indra Nandana Shama. Separation. Where are you? Where are you? Are you at Yamuna? Are you at Amsi? What? Where are you? Where can I see you? The gopis are searching for Krishna. The gopis, overwhelmed by feeling of separation from Krishna, sat down on the banks of Yamuna after continuously searching for Krishna for a long time. Each gopi began addressing Sri Krishna, the personal manifestation of all enjoyable taste, according to her individual mode of ecstasy, and praying to Shyam's merciful darshan. As the pastime of Krishna simultaneously arose in the minds of the gopis, whose consciousness was fully imbued with Shyam's presence, they sang their song, Gopi Geet, which relieves the agony of those separation from the burning pains of those suffering from the burning pains of separation from Krishna, which bestows supreme auspiciousness. So gopis, they are like singing, in separation. Radha Krishna Prana Mora Yugala Kishore Tiya Mala Tirmala. So what does this do? They are singing this song, and that, hey Krishna and Radharani, you are seated on the throne, and the Malti Mala is there on your shoulders, put around you. Chandan, we are applying Chandan and giving you Tambula. So what happens with this Geet? Krishna remembers his pastime with Radharani, and he wants to move, he wants to run to that place where this pastime are being sung or being, people are experiencing the separation. Like Krishna says, I am not in Vaikuntha, I am not in Golok, I am not in the Char Dham, I am not in my Dham, I am not here, temple here. Where are you? I am where my devotees are singing my glories. So Krishna becomes swift. You also become swift towards Krishna when you are chanting the Gopi Geet, separation, feeling separation, and then singing such bhajans that forces Krishna to pay attention and come. Because when you sing such rasika, the bhajan filled with bhava and emotions and prema, that moves Krishna. So he goes into samadhi, absorption. Oh, he thinks, oh, I am sitting, with Radharani and on the singhasan, on this throne, and different devotees are doing this seva, Thiya, Malati, Marano. Someone is putting Tambula, someone is putting Chandan, someone is doing my Aarti, someone is doing this, that. He goes into that mood. So you create a mood by your chanting for Krishna to get attracted to come to you. Understanding? This is how you create, you develop, what is attachment to Krishna, attraction for Krishna, absorption with Krishna, and then affection finally. And that forces Krishna to also come swiftly to you. And your bhakti also become very swift. And there's a link. Mana yoga, junjan yoga link is established. So this is how you become, by Venu Geet. By Yugal Geet. Yugal Geet means both of them are together. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Gokul Taruni Mandala Mohitya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha
Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Yashodanandana, Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। तो पहले वाला था वो सेपरेशन, युगल गीत यूनियन, यूनियन का गीत होता है जहाँ पे दोनों राधा कृष्ण का यूनियन हो रहा है, वो पास टाइम में अपने आप को एब्जॉर्ब करना, उससे कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन, अफेक्शन, एब्जॉर्प्शन ये सब डेवलप होता है। एंड देन कृष्णा मूव्स स्विफ्टली टू यू एंड यू मूव स्विफ्टली टू कृष्णा. Your love and your bhava and prema for Krishna is aroused by such pastime when you hear Yugal Geet. And then again Viraha, Gopi Yugal Viraha, गोपी गीत सेपरेशन, यूनियन, सेपरेशन. हरे कृष्ण महामंत्र क्या है पता है आपको? व्हाट इज हरे कृष्ण महामंत्र? हरे कृष्णा यूनियन, कृष्णा कृष्णा हरे हरे सेपरेशन, सेपरेशन, मीटिंग सेपरेशन, मीटिंग सेपरेशन, मीटिंग सेपरेशन. दिस इज व्हाट सेपरेशन मेक्स द मीटिंग वेरी स्वीट. मीटिंग के बाद में सेपरेशन, दैट मेक्स इवन मोर, बिकॉज यू मीट समवन फॉर देन यू आर सेपरेटेड. So when you're separated, you love that person more, you won't think about that person more. कब वापस मिलेंगे? So both nourishes each other. So both goes, so like that, while chanting also, one should try to develop this mood. Union, separation, union, separation, union, separation, union, separation. इससे आपका जो अटैचमेंट है कृष्णा के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. कृष्णा का अट्रैक्शन आपके प्रति, अटैचमेंट आपके प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा. रिलेशनशिप कृष्णा से बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा. And you'll be able to connect with Krishna very, very swiftly. Viraha Geet. Then finally the Brahmar Geet, where Radharani and all are experiencing deep madness for Krishna. Deep madness, where Krishna is left, Uddhav has come. So, and Radharani thinks that, she's speaking to the bumblebee, taunting the bumblebee, so that Uddhav listens and he goes back and tells to Krishna the taunts of Srimati Radharani. So that is the highest level of madness which she feels. That is, in technically Prajalpa, Chittajalpa, Ajalpa, and Mahabhav से भी आगे की स्टेज होती है, इसको बोलते हैं अनिरुद्ध and Ruddha Mahabhav, where you become completely maddened in love with Krishna. So those kind of pastimes, when you put your mind into those kind of pastimes, Brahmar Geet, Venu Geet, Gopi Geet, Pranay Geet, then Yugal Geet, all these, when you put your mind and apply yourself into understanding these pastimes more and more and more, then your attraction to Krishna will become so stronger, then attraction, then you become totally absorbed whenever you're chanting the Hare Krishna Mahamantra, because each pastime is expandable. आपको खाली कैप्सूल में बताया गया है शास्त्र में. आप उस पास्टाइम में जब अटेंशन से सुनोगे, चैंटिंग करोगे, उसमें अटेंटिव रहोगे, तो वो कैप्सूल एक्सपैंड करेगी और आपको उस पास्टाइम की और डिटेल्स और वेरिएशंस और डिफरेंट उसमें जो किरदार है वो सब एक के बाद में एक समझ में आएंगे. एंड देन इट बिकम्स सो मच एब्सॉर्बिंग, टोटली एब्सॉर्ब्ड इन दैट. Every time you recollect that pastime, you think that pastime something new will be there to absorb you even more and more furthermore. So that, like that, your attachment to Krishna will increase more and more, and then finally your emotions for Krishna will come out, because it's adbhut. When something is adbhut, then you become very emotionally attached to that thing, and you express your feeling to anything adbhut, magnanimous, magnificent. Understand? This is how
you develop. So this is why Krishna is saying, although fixed in his abode, Krishna is swifter than the mind and can overcome all other runnings. For us also, our bhakti also become very swift when we develop this kind of mood and attention for Krishna. And we chant our Hare Krishna Mahamantra in this kind of mood, where we try to develop, attraction to Krishna by hearing, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Kathas, deity worship, and Guru Kripa. Everything combined makes us, a spontaneous lover of Krishna. And that is what attracts Krishna, and he comes to us very swiftly. And we also can go to Krishna very swiftly, and we can see Krishna whenever we want to see, experience Krishna. Even in this mortal body, in the material world, you can be in samadhi 24/7. What is samadhi? When you're thinking of Krishna always. So a devotee is always in Uttam Adhikari is always in samadhi. He may be doing so many other works, but his mind is always absorbed in Krishna's Naam Gun Roop Leela, always in samadhi. Samadhi doesn't mean close eyes and see. Samadhi means open eyes and also see Krishna. That is real samadhi. Close eyes करके ध्यान लगाना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन खुले आंख से पूरे वर्ल्ड को देखना, फिर भी आपका माइंड कृष्णा में लगे होना, माया सकम मना पार्थ, ये है रियल समाधि. और यही रियलाइज होती है जब हम कृष्णा से इस तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, कृष्णा के पास टाइम से. और ये जितने पास टाइम है वो हमको नरिश करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए, वो अटैचमेंट के लिए, अफेक्शन के लिए, कृष्णा के लिए. The powerful demigod cannot approach him. Krishna says, no, only a devotee can approach Krishna and develop this kind of bhavas, not any demigod. Although in one place he controls those who supply air and rain. That Krishna is saying here, and also the other part, that he is supplying everything means what? Means Krishna has given us everything perfect. Why Krishna saying, I supply everything, I control all demigods? Because I am Purna, I am perfect, so everything is working perfectly. So even the air, the rains will be perfectly coming to you till तुम अपना दिमाग लगाना चालू कर दोगे. तो प्रॉब्लम क्या हुआ? हमने अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया, हमने कृष्णा के सिस्टम के अंदर ट्वीक्स करने चालू कर दिए, इसलिए हमने कृष्णा से कनेक्ट खत्म हो गया हमारा. अब हमने कृष्णा ने हमको ऑक्सीजन इतना भरपूर मात्रा में दिया, इतना प्योर एटमॉस्फेयर दिया, हमने उसको बर्बाद करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया. अब वो इतना पोल्यूशन है कि वो एयर पोल्यूशन खराब हो गया, खत्म हो गया, प्योर एयर खत्म हो गया, रेन पोल्यूशन का रेन पोल्यूटेड हो गई, और हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिए टू मेक जंगल, क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स. वी डिस्ट्रॉयड द ग्रास जंगल्स. तो उससे क्या हुआ? रेन हर जगह आना बंद हो गया. तो कृष्णा ने ही बोला है, मैंने मैनुअल दिया आप लोगों को, आप उस मैनुअल के अनुसार चलो तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. यदि आप उसमें अपना ट्वीक करोगे, कुछ डाल दोगे, तो यू हैव डिस्ट्रॉयड द होल इकोसिस्टम. जब आपने वो कर दिया, तो दिस इज द रीजन व्हाई यू आर कट ऑफ फ्रॉम मी. Even though I am swiftly coming to you, you are not able to come to me, because you have created a system that has completely cut you off. कोडिंग होता है ना, एक कोड है, वो कोड से आप डालो, पासवर्ड डालो, तो आप सिस्टम के अंदर जा सकते हो. वो पासवर्ड में एक भी 2-3 चीज कुछ कमी हो गई तो आप रिजेक्ट हो गए, आप जा ही नहीं पाओगे उसके अंदर. तो हमने कृष्णा का जो नेचर, जो कृष्णा ने हमको दिया था, माया दक्षिणा प्रकृति, उसमें हमने ट्वीकिंग करना चालू कर दिया. या ये कर लो प्रोग्रेस के नाम पे. जब किया तो हम कृष्णा से एकदम कट ऑफ हो गए. इसलिए लोग बोलते हैं ना, कलयुग में भगवान क्यों नहीं जाते हैं? सत्युग में डेमिगॉड्स भी आते थे, नारद मुनि सब कुछ है ना, कलयुग में क्यों नहीं? कलयुग में हमने इतना कट ऑफ कर दिया नेचर को भगवान से, डेमिगॉड से, कि अब वो जो कोडिंग था, जो उनको एक्सेसिबल बनाता था हमारे लिए, वो कोड ही खत्म हो गया. कोड नहीं है तो आप कैसे उनके दर्शन कर पाओगे? नहीं कर सकते आप. आपको राइट पासवर्ड चाहिए उनके दर्शन के लिए. राइट पासवर्ड यज्ञ, Krishna the yagna purush, he comes to take yagna and he gives to the demigod come to give darshan, everything. हम वो सब करते नहीं है. तो हमने जो कोडिंग थी सबके दर्शन की, हमने वो खत्म ही कर दिया. So that's why we have created the whole artificial economic system and model that is sure to fail, and this is the reason why we have cut off from Krishna. So this is the whole meaning of this, that if you want to develop a swift contact with Krishna again, then you will have to go back to the ecosystem that Krishna created. And what is that ecosystem?
What was that ecosystem, name of that ecosystem that Krishna created? What was that name? क्या था सिस्टम कृष्णा का जो कृष्णा ने दिया था हमको? वर्णाश्रम चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुणा कर्मा विभाजिता। सिस्टम दिया था कृष्णा ने। वो सिस्टम करोगे तो आप स्विफ्टली ये मूड डेवलप कर सकते हो। ये मूड अभी डेवलप क्यों नहीं हो रहा होता है? इतना डिफिकल्ट क्यों है? हमारा माइंड यहाँ क्यों जाता है? क्योंकि हमने सिस्टम जो था कृष्णा को कनेक्ट करने का, उसमें हमने इतने सारे ट्वीक्स कर दिए हैं, बग्स आ गए होते इतने सारे, इसलिए हमारा माइंड भी नहीं लग पाता है, हमारा साधना भी नहीं हो पाती, हमारा माइंड यहाँ चले जाता है, हमारी भक्ति वैसी नहीं हो पाती, हम कृष्णा के प्रति स्पॉन्टेनियस लव डेवलप नहीं कर पाते हैं, हमने सिस्टम को ही चेंज कर दिया। अब वो पूरा एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट मिलेगा भक्ति को जो कृष्णा ने सिस्टम बनाया, वर्णाश्रम बेस्ड ऑन मेरिट, पूर्ण कर्मा विभाजिता एंड सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, जब वो मिलेगा तो जो सिस्टम में रहेगा फास्ट स्विफ्टली कृष्णा भी उससे जुड़ जाएंगे और वो कृष्णा से जुड़ जाएगा। यदि आपको कृष्णा से स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस करनी है तो आपको उसके लिए राइट एटमॉस्फेयर चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बोला 50% ऑफ माय मिशन इज, ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति जो वैदिक भक्ति से राग भक्ति में जाना है उसके लिए सिस्टम चाहिए। शहर में रह के नहीं हो सकती वो। आपके 9 to 8 जॉब के अंदर रागनों का भक्ति नहीं पहुंच सकते आप। आपके प्रोग्रेस के साथ में रागानो भक्ति नहीं पहुंच सकते आप। वैदिक भक्ति में ही रहोगे। रागानो का भक्ति के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने 50% सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया वैदिक भक्ति का, अर्शत का विधि। अब भागवत भक्ति का भागवत विधि जो देवी वर्णाश्रम है वो एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक एटमॉस्फेयर दे, परफेक्ट एटमॉस्फेयर आपको कृष्णा के प्रति स्पॉन्टेनियसली भक्ति करने के लिए, वो सिस्टम है देवी वर्णाश्रम जो हमको डेवलप करना है। वो हम कर देंगे तो फिर सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा और हम स्विफ्टली कृष्णा से मिल पाएंगे और कृष्णा हमसे स्विफ्टली मिल पाएगा।